So before start, we'll look at the anatomy. Okay, bit of anatomy. If you remember, the gallbladder is in a gallbladder पाउच टाइप है, तो अंडर साइड ऑफ लीवर में रहता है. ठीक है. पार्ट्स क्या क्या होते हैं उसके? फंडस, दिस इज फंडस, बॉडी, एंड दिस इज द नेक. नेक टेपर्स इनटू फॉर्म सिस्टिक डक्ट. Then we have right hepatic duct and left hepatic duct, which they come from the right lobe and left lobe of the liver. They together come to form common hepatic duct. This common hepatic duct and the cystic duct together forms common bile duct. Now the common bile duct, in 70% of cases, common bile duct and pancreatic duct, they joins together to form what? क्या बनाता है दोनों join करके? Something ampulla, some ampulla बनाते हैं. क्या ampulla? Hepatopancreatic ampulla of Vater. ठीक है. Now it's a schematic diagram. This is the green one is the hepatopancreatic ampulla of Vater, and here luminal side of the duodenum, second part of the duodenum. So ये जो red वाला है, this red is a longitudinal muscle fibers, and these are the circular muscle fibers. They form the sphincter of Oddi. ठीक है. Sphincter of Oddi comes under the influence of another hormone. Anyone know name of that hormone? कौन से hormone के अंदर काम करते हैं? Cholecystokinin. Now look at the histology. Gallbladder, they lack muscularis, mucosa and submucosa. Okay, 4 layers होते हैं from inside to outside. Mucosa is lined by tall columnar epithelium. Then we have followed by lamina propria. Lamina propria में capillaries मिलता है. Then हम smooth muscle layer. Smooth muscle layer जो है वो comes beneath the lamina propria. So 3 टाइप के muscle fibers होते हैं. Inner one is longitudinal, middle one is oblique, and the outer one is circular. They followed by एक perimescular layer है जो fibrous tissue से connected होता है और some fat cells होते हैं. Then we have serosa. Serosa almost covered the entire gallbladder except for what part? जिसको पता है कौन सा part? It is not covered by serosa. This is your homework, okay? You know about it. Now, another thing, that is bile. It is also known as gall. It is a greenish yellow secretion that is produced in the liver, ठीक है? And bile ducts. ये gallbladder में क्या होता है? Gallbladder में don't answer anyone, okay? कि gallbladder में bile produce होता है. Gallbladder में bile stored होता है, ठीक है? Stored होता है and concentrated होता है. Then it gets transported to second part of the duodenum. फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट. कॉम्पोजिशन 97% to 98% वाटर रहता है. देन बाइल सॉल्ट्स, बिलिरुबिन, फैट. फैट में क्या रहता है? कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लेसिथिन वगैरह, एंड सम अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होता है. नाउ डज एनीवन नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड एंड बाइल पिगमेंट्स? Anyone of you know what is bile acid? Bile acid actually it is produced from liver. Okay, 2 types होते हैं, primary bile acid, secondary bile acid. Primary produced from the liver from cholesterol. ठीक है. क्या होता है? कोलिक एसिड और कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड. नाउ क्या होता है? इंटेस्टाइन में आके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसको मॉडिफाई करके बनाते हैं बीथोकोलिक एसिड एंड डीऑक्सीकोलिक एसिड. दिस इज बाइल एसिड. बाइल सॉल्ट क्या है? बाइल एसिड प्लस एन एमाइनो एसिड, कॉन्जुगेशन होता है एमाइनो एसिड के साथ. कौन से 2 एमाइनो एसिड? लाइसिन एंड टॉरिन. दे फॉर्म ग्लाइकोलेट एंड टोरोकोलेट. ठीक है. उसका सॉल्ट क्या सॉल्ट है? तो इसमें कोई कैटायंस रहेगा. सोडियम एंड पोटेशियम आर द कैटायंस. ओके. देन वी हैव बाइल पिगमेंट. बाइल सिंपल है, बिलिरुबिन, एंड दिस इज द बाइल. ओके. तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना फ्यूचर में, कोई पूछेगा तो.
नाउ कोलेलिथियासिस, ठीक है। सिमिलर कुछ टर्म्स होते हैं कोलेलिथियासिस के टाइप में, कोलेलिथियासिस, कोलेसिस्टाइटिस, कोलेडोकोलिथियासिस एंड कोलांजाइटिस। तो कोलेलिथियासिस मतलब क्या है? स्टोन फॉर्म हो रहे हैं, कोले मीन्स बाइल, लिथ मीन्स स्टोन, यासिस मीन्स प्रोसेस। यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है। कोलेसिस्टाइटिस मतलब आइटिस, इन्फ्लेमेशन, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन। कोलेडोकोलिथियासिस मीन्स स्टोन जो है दे गेट लॉस्ट इनटू कॉमन बाइल डक्ट। कोलेडोको, डोको इज डक्ट, ओके। फाइनली कोलांजाइटिस, कोलांजाइटिस का मतलब क्या है? ये जो बिलियरी डक्ट्स, बिलियरी ट्रैक्ट सिस्टम का इन्फ्लेमेशन को हम कोलांजाइटिस कहते हैं। तो गॉलस्टोन क्या है? आर फॉर्म फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बाइल, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, कैल्शियम सॉल्ट वगैरह से, ठीक है। दे आर मेनली फॉर्म्ड इन गॉल ब्लैडर, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फॉर्म्ड इन गॉल ब्लैडर इटसेल्फ। रेयरली क्या होता है वो एक्स्ट्राहेपेटिक पैसेजेस में फॉर्म होता है, एंड वेरी वेरी रेयरली इट इज फॉर्म्ड इन इंट्राहेपेटिक डक्ट। 95% ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज इज एट्रिब्यूटेड टू गॉलस्टोन। जो भी मैंने बताया अभी, कोलेडोकोलिथियासिस, कोलांजाइटिस वगैरह जो भी है, इट इज एट्रिब्यूटेड टू, उसके अगर वो सब डायग्नोसिस में मिलता है तो कंफर्म रहना कि गॉलस्टोन्स आर देयर। नाउ एपिडेमियोलॉजी, इट अफेक्ट 10 to 20% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इन हायर इनकम कंट्रीज, ठीक है। दो क्लासेस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन एंड पिगमेंट स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो है दे आर मोर प्रेवलेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज उनका डाइट भी हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट होता है, ठीक है। एंड पिगमेंट स्टोन जो है वो हमारे यूजुअली ईस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा मिलता है। टाइप्स, दो टाइप के, कोलेस्ट्रॉल स्टोन एंड पिगमेंट स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन इट कंटेन्स more than 50% crystalline cholesterol monohydrate, और पिगमेंट स्टोन देयर आर टू टाइप्स, ब्लैक एंड ब्राउन। ब्लैक में क्या है? कैल्शियम सॉल्ट जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ बनाता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एंड म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन। ब्राउन में क्या सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं एज ब्लैक, प्लस कैल्शियम सोप्स होते हैं, कैल्शियम स्टीयरेट, कैल्शियम पाल्मिटेट। नाउ रिस्क फैक्टर, शॉर्ट निमोनिक में याद रखें 4F, फैट, फोर्टी, फीमेल एंड फर्टाइल, ठीक है। तो फर्स्ट एज एंड सेक्स में क्या है? प्रीडोमिनेटली मिडिल टू ओल्डर एज में दिखाई देता है, ठीक है। एंड फीमेल में प्रिवेलेंस हायर है इन एनी रेस, कोई भी रेस हो, कोई भी एथनिसिटी हो, फीमेल्स में हायर होता है। देयर आर आल्सो strong associations can be seen with metabolic and obesity, metabolic syndrome and obesity. Now the environmental factor, ठीक है। why female में क्यों? एस्ट्रोजन एक्सपोजर थ्रू OCP यूज और प्रेगनेंसी क्या करता है? the over expression of hepatic lipoproteins, ठीक है। and also it stimulates enzyme HMG coenzyme A reductase. this HMG coenzyme A reductase क्या करते हैं? it stimulates cholesterol biosynthesis and increases its uptake, ठीक है। Again, rapid weight loss also seen in strongly associated with increased biliary cholesterol secretion. Some acquired disease, अगर gallbladder stasis हो गया, either it may be neurogenic or due to hormonal, तो क्या है? This fosters an favorable environment for pigment stone and cholesterol stone formation. Another one, hereditary factors जो है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में चांसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ज्यादा दिखाई दे अगर, ठीक है। And another is mutation of CYP7A1 you remember this one, okay, it will come later also. It results in differentiation of enzyme cholesterol 7-hydroxylase जो bile acid synthesis में यूज होता है, it is associated with hypercholesteremia. Another one is gene encoding hepatocyte proteins, ठीक है, जो बिलियरी लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने की हेल्प करता है। उसमें भी हमने देखा अगर उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया तो उसमें भी गॉलस्टोन से एसोसिएशन होता है। दिस इज इंडिविजुअलाइज्ड रिस्क फैक्टर। कोलेस्ट्रॉल जैसे मेनली वेस्टर्न कंट्रीज, एडवांसिंग एज, फीमेल सेक्स हार्मोन, OCP यूज, रैपिड वेट रिडक्शन, इनबॉर्न डिसऑर्डर्स ऑफ बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म। पिगमेंट स्टोन का क्या है? एशियंस मोस्टली अफेक्टेड होते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न
एंड देयर इज रूरल एरिया में ज़्यादा मिलता है। क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया में दिखता है हमें, सम बिलियरी इन्फेक्शन में दिखता है, ठीक है, सम जीआई डिसऑर्डर लाइक जीआई डिसऑर्डर्स लाइक पोन्स डिजीज, इलियल रिसेक्शन वगैरह में हमें ये सब दिखता है, ठीक। नाउ पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस, टू अंडरस्टैंड पैथोजेनेसिस फर्स्ट ये थिंक कि बाइल एसिड में तीन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड दैट इज लेसिथिन एंड बाइल एसिड, ठीक है। बाइल में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ये तीन कंपोनेंट एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज हो गया तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रोल, ओके। कैसे हो सकता है? अगर कोलेस्ट्रॉल हाइपर सिक्रेशन भी हो रहा है, ठीक है, जो जैसे हमने पहले बताया था एचएमजी को एंजाइम में रिडक्टेस करता है, उससे हो सकता है। और देयर इज डिक्रीज इन बाइल एसिड सिंथेसिस फूड, कैसे? म्यूटेशन CUIA P71 जीन जो कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को ऑल्टर कर देता है, इसकी वजह से क्या बाइल एसिड सिक्रेशन कम होगा। देन वी हैव हाइपोमोटिलिटी ऑफ द गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर मोटिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? कोलेसिस्टोकाइनिन, ओके। कोलेसिस्टोकाइनिन स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर रिसेप्टर की कमी हो गया तो उसमें स्टैसिस हो जाएगा, ठीक है। देन एक्सेलरेटेड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल न्यूक्लिएशन। अब इसका न्यूक्लिएशन मतलब जो कोर बनता है, स्टोन का जो कोर होता है ना, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस जो एक्सेलरेशन कब होता है? तब देयर इज आइदर लैक ऑफ एंटी न्यूक्लिएटिंग फैक्टर लाइक एपोलाइकोप्रोटीन्स A1 and A2, and there is pro nucleating factor like mucin and non-mucin glycoprotein. Finally, hypersecretion of mucus in the gallbladder that traps the nucleated crystals. Now comes the pigment stone. Pigment stone फॉर्म होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विद कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है। द फैक्टर्स जो है, ठीक है, बिलियरी इन्फेक्शन, सर्टेन बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई एंड सर्टेन पैरासाइट्स लाइक Pronorchis, Ascaris, they secrete an enzyme called beta glucuronidase. Beta glucuronidase क्या करता है? डीग्लूकोरोनाइजेशन करता है, जिससे क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड का अनकॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोनिक हीमोलाइसिस, इसमें क्या होता है कि रेड सेल जो है वो ब्रेक डाउन होता है उसका, ठीक है। इलियल डिसफंक्शन में भी हो सकता है। एंड फाइनली बिलियरी कॉन्टिनेशन। नाउ मॉर्फोलॉजी में दो होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो है दे आर मेनली कंसिस्टेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑफ 50 to 100%, ठीक है। प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, दे अपीयर पेल येलो एंड हार्ड होते हैं, ठीक है। व्हाइल द मिक्स्ड स्टोन्स दे आर ग्रे व्हाइट एंड ब्लैक कलर। साइजेस वेरी करते हैं, ठीक है। एंड they are multifaceted because they are in stays in tight association with each other. सर pigment stone black stone जो है वो sterile gallbladder bile में मिलता है, whereas brown stone it is infected bile ducts. Both type consists of unconjugated bilirubin and calcium crystal, ठीक है। सिर्फ brown वाले में क्या होता है? extra calcium source भी होता है। black वाला they are many in numbers, okay, they are friable, they have spikes on them. Brown wala is greasy, they have soft and laminated, they are greasy in appearance. Now clinical features. Most of the patient, around 70 to 80%, they remain asymptomatic for life. और asymptomatic से symptomatic का conversion भी very slow है, 1 to 4%. पेन कब होता है? Usually you'll find a patient they complains कि सर कुछ हैवी खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा है, and this pain sometimes occurs why? Because of the contraction of the gallbladder. It's localized to right upper quadrant and ये जो है radiates to shoulder and back. Another is Vogerate syndrome. It's sometimes क्या होता है, जो large gallstone होता है, they erode the mucosa and they comes into the small intestine. वहाँ पे क्या हुआ? bowel obstruction करता है। Now complication क्या होता है? Cholecystitis, pancreatitis, cholangitis, gallbladder perforation and fistulas. So till now any doubt regarding gallstone? Now cholecystitis. It is again it is the inflammation of the gallbladder.
can be acute, it can be chronic, or acute superimposed on chronic. It always occurs in association with gallstone. Chronic cholecystitis ये क्या है, more common है. Acute cholecystitis अगर होता है तो it is a surgical emergency. Now acute cholecystitis, it is precipitated in 90% of the cases by obstruction. अगर obstruction हो गया है तो certain spasm होता है. This causes the acute cholecystitis. Two forms होते हैं, ठीक है. Acute calculous cholecystitis, the primary complication of gallstone. के gallstone क्या होता है, वो जाके around it gets lodged in the neck or in the cystic duct, ठीक है. And acute acalculous cholecystitis, ये severely ill patient में दिखाई देता है. Morphology क्या होता है, usually जो bladder होता है वो enlarge होता है, tense red, bright red और violet color का होता है और greenish black होता है, क्योंकि because of subserosal hemorrhage. Serosal surface will be covered with fibrin and exudate. अगर long term inflammation रहा है तो fibropurulent भी हो सकता है. The only difference you can find between calculous and acalculous one is the presence of stone in the neck of the cystic duct. Finally, gallbladder empyema है जिसमें luminal जो exudate है is purely pus on. Microscopic feature that is of acute inflammation क्या होता है, congestion, edema रहेगा, neutrophils रहेगा. Clinical features: progressive right upper quadrant pain or epigastric pain for lasts more than 6 hours. Symptoms that are fever, anorexia, nausea, vomiting, tachycardia, sweating. ठीक है. Left fainting क्या, mild to moderate leukocytosis. यहाँ पे elevated ALP, ठीक है. This is important. Acute acalculous has more insidious onset, ठीक है. Chances of gangrene and perforation ज़्यादा रहता है. It can be due to bacterial conditions like vasculitis, atherosclerosis. Now, chronic cholecystitis, repeated attacks of acute cholecystitis के बाद होता है, but without any prior acute episode के बिना भी हो सकता है, ठीक है. It is associated with gallstone more than 90%. So risk factor almost similar, ठीक है. Bile super saturation predisposes to chronic inflammation, stone formation. The bacteria can be presented in 1/3 of the case. Bacteria in the bile. Morphology. Gallbladder जो wall होता है वो thick end होता है, ठीक. तो serosa is smooth, but the mucosa is subserosal fibrosis भी दिखाता है. Lumen में क्या होता है, green yellow mucoid bile दिखेगा आपको, while the mucosa is relatively preserved. Now this is the gross feature, ठीक है. Since it's a chronic inflammation, microscopic features, chronic inflammation है तो there is lot of lymphocytes, plasma cells, and this one is Rokitansky Ashcroft sinus. ये characteristic है of chronic cholecystitis. Anyone, any doubt? Clinical features, go ahead. रिकरेंट अटैक होता है, एपिगेस्ट्रिक पेन, ठीक है. नोजिया, वोमिटिंग वगैरह होता है, माइल्ड होता है, नॉट एज मच एज एक्यूट, माइल्ड होता है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं. एंड कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, गॉलब्लैडर परफोरेशन जिससे एब्सेस फॉर्म हो सकता है, गॉलब्लैडर रप्चर दैट कैन लीड टू पेरिटोनाइटिस, biliary tree fistula, and finally intestinal obstruction. Thank you.